Good morning, children. Today in GK we are going to fill chapter 14, that is carnivorous plants. Okay, children, few pictures are provided over here of the carnivorous plants. Children, there are about 550 species of flesh eating or carnivorous plants. Okay, so why do they need to feed on flesh? To survive. Okay, they actually grow in places where they cannot get enough nitrogen, which is essential for their growth. So they get it from the insects. Okay. So in this particular exercise, what we are needed to do, here read the description and write the names of the carnivorous plants, taking help from the given clues. These are the clues provided to us, children, and below are the descriptions. These all are the descriptions. On the basis of these descriptions, we are needed to write the name of that particular carnivorous plant. Okay, so let's move on with question number 1. The leaves of this plant are covered with tentacles from which sticky drops called mucilage come out. Okay, children, when an insect lands on the sticky tentacles, it is trapped and ingested by the tentacles. Okay, so which plant is that? It is sundew. Okay, next comes number 2. It looks like a cobra. This carnivorous plant looks like a cobra. Its sweet nectar attracts insects to the mouth of its trap. Means this particular plant, it gives sweet nectar, okay, which provides sweet nectar to the insects, and as the insects come to have it, it traps it with the mouth, okay, with its mouth. From there the insects fall to the bottom where they are digested by the plant. Okay, so when they come to have those sweet nectar, it traps, okay, that plant traps the insects and the insect falls to the bottom where they are digested by the plant. So what is the correct answer? The correct answer is cobra lily. C-O-B-R-A, cobra, L-I-L-Y, lily, cobra lily. Okay, children. Now next, number 3. Insects are lured into the jaw-like leaf trap of this plant with nectar. Once the insect lands, the jaws clamp shut on the victim in a short while. What happens when the insects are lured into the jaw-like leaf trap? Leaf की जो है एक trap type की उसकी jaws होती है, और जैसे ही इंसेक्ट्स आते हैं उसके नेक्टर लेने के लिए देन व्हाट हैपेंस, इंसेक्ट्स जो है वो लैंड कर जाती है नीचे जॉस के अंदर उस प्लांट के, और प्लांट जो उसको क्लैम्प करके शट कर देता है और विक्टिम को अंदर ले लेता है. ओके, सो विच प्लांट इज दैट? इट इज वीनस फ्लाई ट्रैप. VENUS, Venus, FLY, fly, TRAP, trap, Venus fly trap. Okay, children, now question number 4. It gets its name because its leaves secrete drops that look like butter. Means इस प्लांट, ये जो प्लांट है कुछ लिक्विड, एक बटर टाइप का लिक्विड को सेक्रेट करता है अपने लीव्स से. ओके, these drops have the digestive juices of the plant. ये जो बटर लाइक जो लीव्स जो है ड्रॉप्स को सेक्रेट करता है, ये क्या करता है उस प्लांट के लिए, ये जो जूस निकलता है ये इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए डाइजेशन का काम करता है. ओके, इट प्लेज एज अ helps in its digestion. Okay, so which plant is that? It is butterwort. That is why it is known as butterwort, because जो leaves जो secrete करता है drops, it looks like butter. That's why it is known as butterwort. B-U-T-T-R, butter, W-O-R-T, wort, butterwort. Let's move on to question number 5. This plant is shaped like a large jug. ये जो प्लांट है इसका जो शेप है बड़े से जग की तरह होता है. When insects come close, they get attracted to the plant's bright colors and the sweet smelling liquid of the plant and are trapped in it. Means ये जो प्लांट है वो जग की तरह बड़ा होता है, दिखता है उसका शेप, और वो जो इंसेक्ट्स जब उसके करीब आती है और
उससे अट्रैक्ट होती है उस प्लांट से। कैसे? तो प्लांट्स के द्वारा एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड निकलता है और उसके कलर से वो अट्रैक्ट होती है, और उसके बाद क्या होता है, उस प्लांट जो है वो उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, मीन्स पकड़ लेता है। ओके, सो विच प्लांट इज दैट? इट इज पिचर प्लांट, PITCHER, pitcher, PLANT, plant, pitcher plant. Let's move on to question number 6. This water plant has small bladders with tiny hair and a trapdoor which is open from inside. Means ये जो प्लांट है, दिस वाटर प्लांट, ये एक वाटर प्लांट है जिसमें छोटे छोटे ब्लैडर्स बने रहते हैं और टाइनी हेयर के साथ में, छोटे छोटे हेयर के साथ में ब्लैडर्स बने रहते हैं जो कि ट्रैप डोर के जैसा काम करता है। और क्या होता है फिर? विच इज़ ओपन फ्रॉम इनसाइड, जो कि अंदर से खुला हुआ रहता है। एंड व्हेन एन इंसेक्ट टचेस द हेयर, जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके हेयर को टच करता है उसका डोर खुल जाता है। एंड सक्स द इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट को सक कर लेता है और अपने डोर को स्नैप शट कर देता है। ओके, so which plant is that? It is bladderwort, BLADDER, bladder, WORT, wort, bladderwort. Okay children, next number 7. This is a native plant of North America. Means ये जो plant है ये North America का native plant कहलाता है। Okay, it has a deep tube having nectar around it. Means इसके अंदर एक deep tube है, एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसमें कि नेक्टर होता है, जिसमें नेक्टर होता है फॉर इंसेक्ट्स टू फॉल इनटू। जो नेक्टर किस लिए होता है? ताकि इंसेक्ट्स जो है वो उसके अंदर घुसे नेक्टर पीने के लिए। ओके, सो विच प्लांट इज दैट? इट इज सेरेसिनिया, SARRACENIA, सेरेसिनिया। Okay children, so with this I think we have done with this particular chapter. So in homework what you people are needed to do, you all are needed to learn this chapter and fill the chapter with the answers I have given you all. Okay children, thank you.